हाय आदित्य है सामने आपके सामने ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप में एज ए ओम, उसके लिए किस तरह की तैयारी की आपने, क्योंकि काफ़ी कमाल का लगा वो। थैंक यू। एक्चुअली ये एक 3-4 महीने की प्रोसेस थी। इट वॉज क्वाइट फनी क्योंकि मुझे एक्शन सीखना था। आई हैड नेवर डन आउट एंड आउट एक्शन बिफोर, तो आई डिड 4 months ऑफ मार्शल आर्ट्स और बॉडी बिल्डिंग भी ज़रूरी था बिकॉज एक्चुअली क्या होता है मार्शल आर्ट्स करते हुए मसल लॉस होता है। तो आई वुड वेक अप इन द मॉर्निंग, एक्चुअली मैं बोल दूँ दिन का no, not, I won't bore you with that. But it was basically 2 hours of action in the day and 2 hours of weight training at night. And बीच में हम लोग मिलते थे writing sessions के लिए. तो it was like an OM boot camp in life. आदि, आपसे पहला सवाल है कि ये एक कस्टम बनते जा रहा है कि शर्ट उतारना है, ये फीमेल फैन फॉलोइंग का प्रेशर होता है या स्टोरी की डिमांड होती है? I think ये कॉम्बिनेशन है। प्रोड्यूसर की डिमांड थी। प्रोड्यूसर की डिमांड भी होती है, बट आई थिंक इफ यू लुक एट इट, लॉट ऑफ एक्शन फिल्म्स, फिजिकलिटी एक रिक्वायरमेंट होती है, एंड स्पेशली इन अ फिल्म लाइक दिस। तो इस फिल्म में तो बनता है, आई थिंक। और अच्छे भी लग रहे हो। कपिल, आपसे एक सवाल है संजना के लिए, इधर मैं यहीं पर हूँ। इतनी प्यारी मासूम से दिखती हैं ये, इनको इतना डेयर डेविल एक्शन वाला अवतार देने के लिए कैसे आपने सोचा? It was a character when we wrote the film and हम बहुत कि किसको कास्ट करें, you know, how can we make this something different, because हम पहले से ये सोचे थे कि यार आदि is part of the film, you know, इसको for him we are going all the way out to do action and you know, अब इसके सामने who will be that girl, you know, who will play this character. And we went through a lot of stuff and and we finally decided when we saw Sanjana and they were like, yaar, ye to, we saw her film and we were like, yaar, Kapil, are you sure that this is the girl? Like there is something about her that we should definitely go with her, and then it was decided together, yeah, let's do this. Yeah. Hi, Adi, this is Pooja here from Bollywood now. Hi. As you mentioned कि आप बचपन से action films देखते आ रहे हो, so, आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है और आपका पर्सनल फेवरेट बॉलीवुड में एक्शन हीरो कौन है? Oh, interesting. Growing up, actually, for me, it was mainly Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jackie Chan, and Van Damme. I have seen all their whole filmographies, even their very, very bad films that no one should see. And over here, I would say maybe Sanjay Dutt. Sanjay Dutt, he has such a aura and a personality, and I think he was one of the first that built a physique in our industry, if I'm not wrong, back in the day. So he was always an inspiration growing up, looking at the way that the shape that he was in. So maybe that. क्योंकि आपके एक्शन डायरेक्टर तो परवेज शेख साहब हैं, तो परवेज शेख के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, और आप एज एन एक्शन डिज़ाइनर और प्रोड्यूसर तीनों जगह किस तरह से ये जुड़ा, किस तरह से ये बना, क्योंकि एक्शन ही मेरे ख्याल में फिल्म का मेजर हाईलाइट रहेगा और होना भी चाहिए जिस तरह का हमने देखा। देखिए, मैं कोरियोग्राफर रहा हूँ पेशे से, सो 25 साल कोरियोग्राफी कर करके हमें वो तजुर्बा आ जाता है कि हाउ डज अ डांस लुक, जब एक एक्टर डांस करता तो फुल फिगर में खूबसूरत कैसे दिखे। तो उससे मैंने आई जस्ट स्वॉप्ड इट टू एक्शन। तो जब मैंने अपनी फिल्में डायरेक्ट की हैं तो उसमें कंसीव करता था मैं पूरा एक्शन, एंड आई शुड डेफिनेटली गिव इट टू द एक्शन डायरेक्टर। एंड परवेज शेख आज टॉप एक्शन डायरेक्टर है हमारे बॉलीवुड के, तो नोबडी बेटर देन हिम। एंड जिस तरह परवेज शेख ने पूरी एक्शन को एक दर्जे पे ले गए हैं, दैट इज़ जो विजन था मेरे माइंड में, उनको मैंने जो कहा, ही डिड इट। बट दूसरा हाथ मैं दूंगा, कपिल हैज़ बीन ही इज़ बिलोंग इन टू एन एक्शन फैमिली। सो उन्होंने बचपन से एक्शन देखते हुए बड़े हुए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने बचपन से, मेरे डैड डॉक्टर है तो उनको डॉक्टरी करते हुए देखा है, किसी के डैड बिजनेसमैन है तो बिजनेस करते हुए देखा है, इनके डैड एक्शन डायरेक्टर है तो इन्होंने सिर्फ तोड़ फोड़ देखा है। तो मुझे इतना पता था कि मैंने जो डिज़ाइन किया है वो परवेज शेख को तो बोल दिया हूँ, वो कर रहे हैं, बाकी हमारे साथ वर्मा साहब भी हैं। सो वरना है तो फिर डरना क्या है। सो इन्होंने भी बोला सर मैं भी थोड़ा फोड़ दूँ, मैं बोला फोड़ो। चूँकि
शारिक साहब थे टू सपोर्ट अस, तो दैट वेंट वेल. बट इस फिल्म में एक्शन अपनी जगह जरूर है, बट मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा मेरे राइटर्स को, वो है राज सलूजा और निकेत पांडे. उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस फिल्म को लिखा है एक लेखक की तरह कि जब आप देखेंगे, जैसे आपका सवाल था लड़ाई किसके लिए, बाप के लिए है, देश के लिए है. यू नो, हम कहते हैं देश मेरी माँ है, ओके. तो इस फिल्म में ओम की लड़ाई 3 चीज से है: अपनी याददाश्त से, अपनी बाप की जो उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं उसे मिटाना है, और देश की एक बहुत बड़ी गौरवशाली चीज है उसे वापस लाना है. तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज. सो व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सोल्जर जो टॉप टू बॉटम इज 100% और उसकी मेमोरी इज 0%, एंड देयर इज अ ह्यूज इमोशन ऑन हिम, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सर्कल है जो अपनी माँ को वादा करता है कि मैं ये सब निभाऊंगा एंड मैं खरा उतरूंगा अपने प्रॉमिस पे. तो ऐसी औलाद हर माँ को मिले, हर देश को मिले. दैट्स द फिल्म ऑल अबाउट. लेकिन अहमद सर, सबसे पहले जरूरी बात यह है कि एक सैनिक होने के लिए सैनिक बनना भी पड़ता है, जो आदित्य ने बनकर दिखाया है, पैरा कमांडो. तो आदित्य से जानना चाहेंगे पैरा कमांडो की लाइफ उनके लिए कितनी हेक्टिक रही. गोपाल फ्रॉम दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर, जयपुर. Yeah, I think while I did have a boot camp for OM, it was not that tough, as tough as the lives of a para commando. I think YouTube पे देखने मिलता है ऐसे videos बनाते हैं आजकल where they show you the lives of these para commandos, and that is extremely tough because they are actually risking their lives. They're risking their lives for honor, for principles, for the country, and they have a lot to sacrifice, and their families as well. So I can't even claim to understand what that would feel like. I am just been an actor trying to portray what they go through. So in all honesty, I don't know, but all respect to what they do, you know. जहाँ तक ट्रेलर देखा हमको इतना समझ में आया कि एक पिता को के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं. ये क्या है फिल्म में कुछ? कपिल थोड़ा बता दो. वो तो आपको आके देखना पड़ेगा सर. नहीं, वो तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाँ नहीं सर, अगर वही जितना समझ में आया वही पॉइंट है अभी के लिए. उसके बाद 1 जुलाई को सर. 1 जुलाई. Hello, this is Siraj Sayed from filmfestivals.com here. 2 questions, one to Sanjana and then to Ahmed bhai. Sanjana, how did you prepare to get into this role? Did you go through action workshops? Did you go through acting training, diction, etc.? And who have been your own ideals while you grew up and reached this stage from rock star till here? Thank you for your question, sir. To play Kavya, I did have to go through a ton of training because she's a girl who can totally take care of herself and she doesn't need any man to kind of fight for her, and she can fight for others. But being a dancer since I was a little girl, I think really set the base for me to kind of be able to pick up choreographies, because while I used to train, I used to feel like an action choreography and a dance choreography is similar. You know, it's about timing, it's about hand-eye coordination. What I did have to learn was, of course, hand-to-hand combat and some amount of weapon use. Because Ahmed sir and Kapil were very sure that Kavya is gonna fight in this film. And she's gonna, you know, do what all the boys out there are doing. So I had a blast actually training, and my dad's been a black belt, a karate black belt. So when I was a little girl and I used to come back from school, he used to be kind of practicing on our chat and make me throw some punches and kicks. And thankfully those came in use a little bit. So also a little bit about the acting side. Right. So the acting side, so I stumbled into acting with Rockstar when Imtiaz found me in my school while I was doing a dance performance. But being a Delhi girl, I've spent my life in theatre in Delhi, on stage. In Delhi University, we have a very vibrant theatre culture.
and I've been working since I was 13 years old, you know, both on stage and in film. So the acting part, I am relatively more confident about, and I've spent a lifetime honing it. So that for me in this film was the easier part. I had to focus more on the action because that was new to me. But obviously there's an endless like growth that lies ahead of me. But for the acting bit, not as much. Not as much. Who are your idols and who are your idols? My idols are many. I'm a nerd, so you know, I've read Michelle Obama's book Becoming, like it's like my bedtime story. I don't know how many times I've read it. And I don't think that as actors, your idols necessarily need to be other actors. But growing up, I mean, Vidya Balan and even Taapsee, they've kind of paved the way for us women in cinema and done things that really make it easier for us as younger female actors, you know. The kind of parts that I'm doing today, I don't know if I could have done 10 years ago. And that's because of the bold steps that they've taken. So I really do look up to them. Thank you. Hi. Sanjana, I want to ask, you are doing action for the first time. What was the most challenging part, and did you sustain any bruises while shooting for this? The most challenging part, I think for me was explosions, yeah. I'm really bad with them. If anything explodes in front of me, I just start running away. So She just hid behind Adi. Itni badi diwar. Hide behind him, and then there are shots where I've left the frame. So I've been a very expensive actor to my producers because many a helicopter has had to be blasted. But yeah, what else? What did you ask? She did twisted her ankle in the fight. But that's an old injury, yeah. While shooting in the house. So yeah, that happened once. वो तो होता ही है. That's bound to happen. Yeah. Well, अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आप पूरी टीम को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि पिक्चर सुपर डुपर इन्फिनिटी हिट होगी. Thank you so much. ये मेरी That's दुआ है. blessings. Thank you so much. Well, मैं भारत के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर से हूँ. मनीषा दुबे, प्रभात किरण से. आदित्य से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी मैं, और उसके बाद आप सब लोगों से भी. आदित्य, ये जो पोस्टर देख रही थी ना मैं, ऐसे वाला ना, तो मतलब यहाँ बैठे और वो पोस्टर में बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ये आप ही हो. तो ये ऐसा वाला जो है ना, ये किसको देख के आता था? और कहते ना अंदर एक कोई आग होती है जो कभी ना कभी आपके सामने आ जाती है. ऐसे एज एन एक्टर ना ये मजाक की बात थी, पर क्या ऐसा अंदर कुछ था जो इस फिल्म के जरिए बाहर निकला है और आपने पर्दे पर? जी, एज एन एक्टर यू हैव टू फाइंड इमोशंस व्हिच आर नॉट देयर इन द रूम. तो कभी-कभी मेमोरी यूज होता है, तो आई हैड टू थिंक ऑफ सम ओल्ड थिंग, और उसका नाम मैं नहीं लूंगा. तो ले सकते हो, छापूंगी नहीं. नहीं आज बाद में बात करते हैं. Thank you guys. Thank you so much. Thank you all you wonderful people. Thank you so much. Thank you.